Good morning. Welcome to English Express class, station number 6 today. Okay. We have already discussed regarding the countable and uncountable nouns. But today, so we are discussing about the quantifiers which are used with the both countable and uncountable nouns. Countable, uncountable noun विषय हम discussion करथिले. एवं वर्तमान आज मु कोन करबी ना क्वांटिफायर्स कहबी जे कि काउंटेबल आ अनकाउंटेबल नाउन विषय रे यूज करिया पूर्वरु को क्वांटिफायर्स माने कहा पाखर बसंती आमे बारंबार ता ऊपर किछि गोटा भूल करथाउ आमे गोटे किछि कमिट करथाउ हमर जते बेले यूज करा जाय तार एरर भी ही जाय तो कहा पाखरे को क्वांटिफायर ता यूज करा जाय से कथाटा को आमे टिके चिंता करके आज टिके डिस्कशन करबा. ओके, so there are so many quantifiers for the countable and uncountable noun. Okay, तो वर्तमान मु तो मु कहबी पिला माने first of all we start it now. Many is the quantifier which used before plural countable noun in negative and interrogative sentences. Okay, जहा कि many गोटे plural countable noun पूर्वरु बसिबो एवं नेगेटिव वाक्य होइथिबो एवं इंटरोगेटिव वाक्य होइथिबो ता भीतर सेटा बसिबो. फॉर एग्जांपल, there are not many students in this class today. There are not many students in this class today means आजी हम क्लास रे बहुत पिला नाहंती एवं many is used before the students and this is the negative sentence. Okay, जदि हमें इंटरोगेटिव करियो जिबा कहिबा हमें are there many students in our class today तो एठी हमर कोन हुए ना इंटरोगेटिव हुए बा क्वेश्चन मार्क हुए. तेणु एई जागा गुडी करे आमे मेनी लगेबा जे कि प्लुराल काउंटेबल नाउन हेतिबो एवं नेगेटिव आ इंटरोगेटिव सेंटेंस हेतिबो. ओके, ए गोटे गल. तेणु आ गोटे होच कोन सेकंड क्वांटिफायर इज मच. मच कोठी बसेबा मच इज यूज्ड बिफोर uncountable nouns. It is also used in negative and interrogative sentences. Take same thing. So it's now negative and interrogative sentence and with the uncountable noun. Okay. He has not much money to maintain his family. Money what a uncountable noun. एवं much लगेला ता पूर्वरु एवं not बाकी होची negative sentence. आमे एठी करिबा has she much knowledge to become an IAS officer. Eta kon hochi na question mark is there. Has she much knowledge? Much is used before knowledge because it is uncountable. Okay, so semti gote ame chinta kale je countable noun purvaru many, uncountable noun purvaru much, both are in the negative and interrogative sentences. Okay, so I would take some debi kon debi. Third quantifier is what? It is a lot of. A lot of is used before both countable and uncountable noun, but it has only use in the positive meaning. It is used only in the positive meaning. So a lot of can be used to both countable and uncountable noun, but it is used only in positive sense. Suppose the library contains a lot of books. The library contains a lot of books. Mane contains library अछि a lot of books. एना books टा होछि plural countable. ता पूर्व बसला हमर a lot of. ठीक सेमती मु कहबी he has a lot of money in the bank. So he has a lot of money in the bank. In the bank, a lot of money. A lot of money means money is uncountable and it is used before. Money is uncountable, a lot of is used before it. तो एई थरा में चिंता करि परछे all lot of टा both countable and uncountable noun उभय पाखरे बसि परिबो किंतु पॉजिटिव मीनिंग रे बसिबो. ओके, सेमती अनदर फोर्थ आमे फोर्थ quantifiers मुझे आ कोई भी से होचे lots of. Lots of have the same use as a lot of. Lot of जेमती यूज होइछि lots of भी सेमती यूज हबो एवं से मध्यम बोथ प्लुराल का both हमें यूज करि परिबा countable and uncountable noun. He has lots of money in the bank. Uncountable is now lots of, and he has
lots of books in English एटा को हम करिबा इंग्लिश लिटरेचर पई ताको मध्ये हम यूज करि परिबा तो एटा को मध्ये हम करि पारले ओके तापरे आउ गोटे सिस्टम अछि आउ गोटे क्वांटिफायर ताको कहिमु सम कोन व्हाट इज दिस सम इज यूज्ड टू इंडिकेट डिग्री और क्वांटिटी but it is used in positive sense degree or quantity degree की बुझेबो quantity की बुझेबो तेनु एठी हम कोन करबा एवं एटा पॉजिटिव वाक्य रे बसिबो कोन से वाक्य रे बसिबो फर्स्ट ऑफ गोटे एग्जांपल टे म दोछि कोन सेटा हबो he bought some sweets on his birthday he bought some sweets on his birthday एटा हम करि पारली कोन कली some sweets on his birthday पॉजिटिव वाक्य किंतु some sweets एटा को मु काउंटेबल लागी पुनी कोन करि परिबी he has saved some money in the bank एठी आमे कोन करले some money मध्ये एटा हला अनकाउंटेबल नाउन किंतु some आमे यूज कर पारले बिकॉज़ इट इज पॉजिटिव सेंटेंस सिमिलरली नंबर 6 क्वांटिफायर होची any so any also shows degree or quantity and it is used in negative and interrogative sentence so केमति कहिबा एग्जांपल he has not bought any sweets today he has not bought any sweets today एटा कोन हला ना नेगेटिव वाक्य को चलला अछि एटा नेगेटिव अछि and जदी आमे इंटरोगेटिव करबा has he bought any sweets to distribute the children on his birthday एटा हला इंटरोगेटिव मार्क एवं क्वेश्चन मार्क तेनु एनी बसला हमरो इंटरोगेटिव रे सो नेगेटिव हे पारिबो इंटरोगेटिव हे पारिबो तो आमे चिंता कले वर्तमान आज रे क्वांटिफायर्स आज रे ए स्टेप ता मु इट रखुची नेक्स्ट स्टेप मु आरंभ करबी अनदर क्वांटिफायर्स इन द नेक्स्ट सेशन ओके सो नेवर फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय